आगमार्थं सुदेवानां गमनार्थं सुरक्षसां पूर्वे दन्दारवन्तद्धैर्यलाभाननाञ्चितं कण्ठस्थिताय गरुडाय नमः गरुडवाहनाय नमः। शुभं करोति कल्याणम् आयु आरोग्य संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपमहादेवे नमो नमः। ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। दीपदेव्यै नमो नमः। अथ संकल्पः श्रीगुरुभ्यो नमः। हि ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते प्राणानायं य। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ ॐ जनः तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों दरेव लग्नं श्रीणं दरेव ताराबलं चन्द्रबलं दरेव विद्याबलं दैवबलं दरेव लक्ष्मीपते गौरीपते ते घ्रियं श्रामि शुभे शोभने मुहूर्ते आब्धवन्मनः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैभवसद्वन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोकान्तर्गत उत्तरमरिकाखण्डे कैनडा देशे एजाक्स नगरे संकटमोचन श्री हनुमान मंदिरे शुभे दिन शोभने मुहूर्ते लोका समस्ताः क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयु आरोग्य
ऐश्वर्याणां विद्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं चिन्तितमनोरथवाप्त्यर्थं सर्वाभिसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थं श्री हनुमत्प्रीत्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं श्री उमामहेश्वरप्रीत्यर्थम् अद्य महागणपतिपूजनं वरनित्यादिदेवतापूजनं श्री आदित्यादि नवग्रहदेवता प्रार्थना श्री हनुमत् बिंब अभिषेक आराधना अहं करिष्ये इति संकल्प्य ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि पार्योः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि पंचामृतमहास्नानं समर्पयामि उपरि शुद्धोरकमहास्नानं समर्पयामि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अत अर्चना। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम वज्रकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम हेरंभाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि दीपं सार्चं त्वत्तिसंयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतमनापहदिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि नैवेद्यं प्रसाद। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि महानि प्राणे स्वाहा पाने स्वाहा व्याने स्वाहा उदाने स्वाहा समाने स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिमात्मा महागणाधिपतये नमः। नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि नैवेद्यानन्तरं विरमाचमनीयं समर्पयामि कर्पूरताम्बूलानि समर्पयामि द्रव्यरक्षान् च समर्पयामि नीराञ्जनम्। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। कर्पूर निराञ्जनं सन्दर्शयामि निराजनानन्तरं विरमाचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि। श्रीगणेश प्रार्थना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की जय। वरुण पूजन। ओम धनद्राय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तस्य रतो ब्रह्मा मध्ये मातगणास्पद कुशतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो तैजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वण अङ्गस्य सेता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता। आयान्तु देवपूजार्थं दरितक्षयकारकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा दधे परं समूढवस्य पागं सुरे पूर्णा दर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसेव विकृणा वहैखमूर्जगोशतकृतो। पूर्णपात्रं समर्पयामि हस्ते पुष्पमादाय वरुण ध्यानम्। ओं नमो मकरवाहाय पाशहस्ताय ते नमः। नमः प्रत्येतसेतुभ्यं वरुणाय नमो नमः। अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि। आसनार्ध्यक्षतान् समर्पयामि। पार्योपाध्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्थानं समर्पयामि। दिव्यपञ्चामृतमहास्नानं समर्पयामि परिशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। वरुणाय नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयाम् उपवीतं मया दत्तं प्रियतां परमेश्वर। वरुणाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। ह्रीश्च ते लक्ष्मीशवज्ञोः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनीषाण अमुं मनीषाण सर्वं मनीषाण। उपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतां च समर्पयामि। पुष्पैः सम्पूजयामि। अर्चना। ओम वंवरणाय नमः। ओम प्रजेतसे नमः। ओम स्वरूपिणे नमः। ओम पाम्पतये नमः। ओम तीर्थराजाय नमः। ओम मकरवाहनाय नमः। ओम जलाधिपाय नमः। ओम पाजहस्ताय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अथर्वणवेदाय नमः। परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। वरुणाय नमो नमः। सुगन्धधूपमाघ्रापयामि। धूपानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि। दीपं चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि। दीपानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि। सर्वरक्षान् धारयामि। नैवेद्यम्। ॐ मधुवातारताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णस्वन्तोषधीः। मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगम्रजः। मरुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमानम् अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु 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 सर्वमहानिवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि। एलालवङ्गकर्पूरताम्बूलानि च समर्पयामि। वरुणाय नमः। द्रव्यरक्षणां समर्पयामि। कर्पूरनिराञ्जनम्। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। नीराजनं सन्दर्शयामि। नीराजनानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि।
सर्वरक्षान् धारयामि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा वरुणप्रार्थना ॐ नमो मकरवाहाय पाशहस्ताय ते नमः नमः प्रचेतसे तुभ्यं वरुणाय नमो नमः ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्राय नमः। ध्यायामि यावा भयत्वं मरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। हनुमरस्राय नमो नमः। श्रीवीरवीराय नमो नमः। सकलाराधनैः सुवर्चितम् आदित्यादि नवग्रहदेवता प्रार्थना। मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता भगवते आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। 3 बार परिक्रमा खड़े हो जाए। ओम यानि कानि च पापानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रकृष्य पापनाशाय प्रकृष्ट फलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमीशं प्रसीद परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष हनुमत। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। अनंत कोटि वृक्ष नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे मे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वमणिभ्यः परं व्याख्यानं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमते नमः। ध्यायामि आवाहयामि पुष्पासनं समर्पयामि पादयोपाद्यं समर्पयामि। हनुमते नमः। अर्घ्यमाचमनीय महिमा अतो ध्यायागिश्च भूरिशः पारोस्य विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवि। एक लाइन बनाइए जो लोग ऊपर आना कोट के साथ अब ऊपर आना मना है। If you want to come, please come. Come in a line, please. So please don't come with your coats, right? Put your coats coming to one of them, okay? अभिजात पुरुषेण विशाखा शांत चाहिए, please.
शरद्दवे सप्तास्या सप्तसविनकृताः देवायत्यज्ञं तद्वानाः अवश्यं पुरुषं वशं यज्ञं मनीषी प्रोक्षण्य पुरुषं जातमकृत तेन देवा अयजन्त ताध्यार्षेक्षे तस्मात्तिजातर्वहुतः संवृतं वृषराजं पशुविष्टाविष्यक्रेवायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात्तिजात् सर्वहुतः वृक्षस्वामानि जग्गिरे छन्दागन्ति जग्गिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादत गावो जग्गिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदभो तदिहाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु कावो रूपाणामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः सबको हाथ लगाइए सबको हाथ लगाइए शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत सुधारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत राजा आसीदन्तरिक्षं चेष्टोऽभ्यो समवत्तरात् तद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रा आसत् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तुपारे सर्वाणि लोकानि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा जीवनजरासे माता पुरस्ताजं ये मध्य का नियम है नमो नारायणाय अद्य सम्भूत पृथ्वीर्ष आच समवर्तताधि तस्य तुष्टा विदधद्भूतमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानवज्ञे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्परस्तात् तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते यस्य वीराः परिजायन्ति योनिं मरीचीनां परमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपते यो देवानां परोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मणं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असंवशे ग्रीष्यते लक्ष्मी शवत्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनीषाणः अमुं मनीषाणः सर्वं मनीषाणः सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं विश्वतः परमादित्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वदेवेनं पुरुषस्तद्विश्वोपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महागेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरो ब्रह्मतत्त्वन्नारायणपरः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमप्येयं कविगं समुद्रेन्दुं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निस्तावितस्रान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सङ्गतकं शिलाभिस्फुलम्भत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानद्युर्विश्वार्च्यदृशतो मुखः सागवतीर्यवोर्गमदशाये लक्ष्मयस्तस्य सन्तता सन्तति संदेहमापालसमस्तकः तस्य मध्ये वनिशिखानीयमोर्भाव्यवस्थिता नीलतोयम्
विज्वले केव भासना नीवारशूकभत्तद्वीपीकाभासत्युपमा तस्य शिखाय मध्ये परमात्मा भवद्यता स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् निर्गं सत्यं वरं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलं ऊर्ध्वरेतं निरोपाख्यं विश्वरूपाय नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः श्री हनुमते नमो नमः रामदूताय नमो नमः महाबलाय नमो नमः जानकी शोक निवारणाय नमो नमः वीर वीरा श्री हनुमते नमो नमः हनुमान चालीसा गाएंगे अभी उसे हनुमान चालीसा चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पूत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते
कवि कोविद कई सकई कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर गए सब जग जाना। युग सहस्र योजन परवान, लील्योताहि मधुर पल जान। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल दिलांघि गय अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारु युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटाई मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम दूत कृपा सिंधो मत कार्यम साधय प्रभो। श्री हनुमते नमो नमः। रामदूताय विद्महे कपिश्रेष्ठाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्री हनुमान अष्टकम। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काली की त्रास कपिस बस, गिर जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि सब दियो, तब छहिय कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लेवाय महाप्रभु, सो तुम दास के सुख निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस बैन उचारो। जीवत ना बच हम सो ज्योति, सुधीराय यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सब, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो गए शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जय महा रजनीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो और लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैर्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि संजीवन हाथ दही, तब लक्ष्मण के दोनों प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन
मानी खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटी सुग्रास निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लै रघुनाथ पताल से धारो। देवी ही पूजी बलि विधि सो बलि, वो सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। आज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, तुम सो नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महा, प्रभु जो कछु संकट होय हमारो। वो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से, अरु धरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम दूताय नमो नमः। श्री राम कहे हनुमाना, सुनो वचन कहो परमाना। सुनो वचन कहो परमाना। श्री राम कहे हनुमाना। श्री राम कहे हनुमाना, सुनो वचन कहो परमाना।
शीश उराना, सुन वचन कहो परमाना, सुन वचन कहो परमाना। श्री राम कहे हनुमाना, श्री राम कहे हनुमाना, सुन वचन कहो परमाना, सुन वचन कहो परमाना। श्री राम कहे हनुमाना। मन काम कियो बरबारी, तुम जीवा वर शहरसारी। मन काम कियो बरबारी, तुम जीवा वर शहरसारी। ब्रह्मानंद भोग सुख नाना, सुन वचन कहो परमाना, सुन वचन कहो परमाना। श्री राम कहे हनुमाना, श्री राम कहे हनुमाना, सुन वचन कहो परमाना, सुन वचन कहो परमाना। श्री राम कहे हनुमाना, श्री राम कहे हनुमाना, श्री राम कहे हनुमाना। श्री हनुमते नमो नमः। आञ्चनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। हम सब श्री राम जय जय राम गाएंगे। सिंग टुगेदर प्लीज। ऊंची आवाज से प्यार भावना से गाना चाहिए सबको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम गाइए, राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ। अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 सुमेरि पवन सुत पावन नामो, सुमेरि पवन सुत पावन नामो। अपने बस करि राखे रामो, अपने बस करि राखे रामो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महावीर बिनव हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम
पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कवन सो काजु कठिन जग माही, कवन सो काजु कठिन जग माही। जो नहीं तात होई तुम पाई, जो नहीं तात होई तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वता पारा, सुनत ही भयउ पर्वता पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सिंहनाद कर बारही बारा, सिंहनाद कर बारही बारा। नीलहि लांघऊ जल निधि खारा, नीलहि लांघऊ जल निधि खारा। श्री राम जय राम जय जय
सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। हनुमते नमः। खड़े हो जाइए। एवरीवन प्लीज स्टैंड। आंचनानंदनम नीरम जानकी शोकनाशनम पतितमोक्षहंतारम वंदे लंकाभयंकरम श्रीरामदूतकृपासिन्धो मद्भाजं साधय प्रभो। आंचनानंदनम नीरम जानकी शोकनाशनम पतितमोक्षहंतारम वंदे लंकाभयंकरम श्रीरामते नमो नमः। हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान शरणागतं हनुमान सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं श्रीराम शरणागतं श्रीराम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं श्रीराम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं श्रीराम स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं हनुमान शरणागतं हनुमान स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हनुमान
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। Those of prasad to offer, please have your prasad ready. Once again, no quotes on the altar, please. If you're putting up there, don't take your quote, please. ये तो गर्भगृह है, holy prasad this time, please. No quotes, please. आप जानते हैं ये साफ नहीं है ना, quotes are not clean. We wash it once or twice a year. तो ये तो गर्भगृह है, भगवान के सामने जाते हैं तो शुद्ध कपड़े से और शुद्ध मन से जाइए, बस। होली प्रसाद this time. Those of prasad, don't take plastic bag when murti. Your thali is inside. Take a thali, you use it. When you finish, you want that. Please don't take any plastic bag, please. जब पूजा होती है तो नियम के अनुसार होना चाहिए ना जी। So please take your प्रसाद। बाकी लोग कृपा करके शांत रहिए प्लीज। श्री हनुमते नमो नमः। प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमो नमः। ओम रामाय रामभद्राय। हिंदू भाई भजन गाएंगे, आइए ना। रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम श्री राम जय राम। 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 राम 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 राजा राम। राम 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 राजा राम। राम 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 सीता राम। राम 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 सीता राम। राम 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 राजा राम। राम 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 राजा राम। राम राम राम
सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। दिवाली के बाद गुजराती न्यू ईयर है, नया साल है, नया साल मुबारक। कितने गुजराती लोग मंदिर में हैं? साल मुबारक, नया साल मुबारक। So our Gujarati brothers and sisters, after Deepavali, they celebrate New Year. Shri Hanumate Namo Namaha. Last week we looked at Hanumanji bringing the news to Bharatji from Uttarakhand. Then we continued on Deepavali day and Deepavali night, where we welcome Sri Ram on the night of Deepavali, and we place Sri Ram to be the Raja of our heart. And those who are here on Deepavali night, I told you, Ayodhya is a place where there is no conflict. Ayodhya. But what happens to all of us? महाभारत वार goes on here हर रोज 24 घंटे। क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, क्या मैं करूं या ना करूं, all these thoughts go through our minds. So when we install Sri Ram in our hearts, we put him in Ayodhya, of course, in another part of India, but Ayodhya यहाँ है। श्री राम हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं। भगवान is always with us. Sometimes we forget him. So we'll go back to then Bali. The arrogant Bali recognized that ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा. Such a situation will not come again in his life, and he chose not to remain alive. So Bali ji let go of his body. This is where we stop at Doha number 10 of Kishkinta Khan. We will sing this Doha and we'll look at the meaning, and then we'll continue with one or two more chaupai. इसके बाद आरती होगी. Generally, people feel that at the time of death, there is a lot of pain. There's a lot of excruciating pain. Some people feel that way. They feel that there's a lot of pain, there's a lot of confusion, we lose consciousness, all kinds of things people make up. And we hear a lot of stories about this final moment. Pyare, we all will have to experience that. It's an experience we can't put off. As long as there is life, this opportunity will come to us to think of Bhagwan at the last moment. Bhagwan says in Bhagavad Gita, Antakali cha mameva smaran muktva kalevaram. Those who think of me at the time of death will come to me. But the strange thing is that what we've been doing in our lives, only those thoughts will come to the mind. So how we've been living our lives? Whatever we're doing, from birth up to the time of death, only those thoughts will come to the mind. That is why we are told, always the rishis, the shastras say, we must chant Ram, Ram, Krishna, Krishna, Om Namah Shivaya, any name of Bhagwan constantly, because no one knows when that moment will come. Just think for a moment, if you had control over death, kya karenge? What will you do? Nobody will want to die. Is that true? We all will remain alive. But as these chaupais will reveal, we have to understand who or what dies. That which has a birth will have to die one day. But you are not this. Jiva Brahma, Jagata Mithya. Everything else is false. The Jiva is the only truth. So that's why we must come to satsang, we must go to mandir, we must read the shastra, we must understand what Bhagavan has to say about death and birth. So this is how Bali gave up his life. Ram charan drida preeti kari
राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग बाली कीन तनु त्याग सुमन माल जिनि कंठ ते कीरत न जान नाम सियावर रामचंद्र की जय शरणम राम चरण दृढ़ प्रीति करी. He developed tremendous love in his heart for Prabhu Shri Ram. A heart does not have love for Bhagavan. Such a person is called stone-hearted. We must have to, when we refer to love, we refer to the heart. And it's not that shape of heart like that, but usually drawn paper like that. This heart is different. Why? The heart is the seat of emotion. That is why at the time of Vivaha Samskar, Pandit Ji, sometimes because of Vivaha Samskar, everybody in a rush. सब लोग पार्टी करना चाहते हैं. They know attention is focused on the samskar. So Pandit Ji has to do jali karke, Pandit Ji karke, jali karo, jali karo. At the time of the Vivaha Samskar, the bride and the groom, first, he will place his right hand by the heart. And we want to unite these two hearts in the world of love. A special mantra will be done there. So the heart is the seat of emotion and love. And love is something that you give only. If you want to receive in love, it's a one-way street. You want to receive. You give, you barter in love. When you really care for someone, you only give of that person. That's true love. So he entertained tremendous love in his heart for Sri Ram as he was about to die. Bali kina tanu tyag. He relinquished the body. He gave up this body. So the jiva separated from the physical body. We are alive, we can say, Main hu, I am alive because of the jiva. The moment that jiva leaves his body, ye to shav hai. This is the difference between Shiva and Shav. दो unique शब्द है, Shiva and Shav. The difference is E की मात्रा. जब भगवान देह में रहते हैं तो शिव है. The moment भगवान exits the body, तो शव है. It has no more value. And what do we find? The Upanishads and Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, they have a lot of passages talking about death. And we have to understand that, my friends. As a matter of fact, in the first verse of the Bhagavad Gita, chapter 2, verse 11, is where the actual teachings of the Bhagavad Gita starts. And बार बार मैं कहता हूँ, I always encourage you. If you're a Hindu, you're practicing Hindu, you love your dharma, you must read Bhagavad Gita. Don't tell me I'm a Hindu and I don't have time to read Shastra. We have time to be on our phones. We have time to do everything else, but not to read Bhagavad Gita. That is why our Hindu brothers and sisters are being brainwashed by people, tell them all kinds of silly things. मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ. I'll change my religion. Because someone brainwash you. अरे भाई, आपके पास money है. You have a gem in your hand, and this gem is covered in garbage. You don't know how to clean that gem to recognize it. How do you recognize it? When you recognize it, then you realize, oh, I have this gem of dharma. But I never paid time to understand it. So, what is part of dharma? The ball is in your court, pyare. Don't blame anyone else. You have to. We have come to a situation in time now where don't complain that you can't read Sanskrit. That's a lame excuse. Everything is in English. It's in Hindi. You must read Bhagavad Gita. As a practicing Hindu, as a Hindu, you have to. And not only you. What do we find? The emphasis is only on getting the child to get a good education, which is extremely important. Important for the child to go from kindergarten to university. Arey bhai, when the child is going to school, why not encourage the child to have a children's version of Bhagavad Gita instead of reading silly novels and all those things? Bhagavad Gita, read Bhagavad Gita. No, हम लोग नहीं करते हैं. But we know our friends from other cultures. They make sure from a tender age they instill in their children the teachings of their Shastra, their religion.
And हम लोग passive है. मैं तो passive Hindu है. The time for that has gone. We have to get up and get. By reading Bhagavad Gita, only then you'll be a proud Hindu. We can't put a sticker, I'm a proud Hindu on my car. ये तो क्या है? कुछ नहीं है. When you know Bhagavad Gita, when you read Bhagavad Gita and Ramcharitamanas, only then you can become a proud Hindu. It must not come from here, it must come from Buddhi. When you understand your dharma, pyare, only then you can be a proud Hindu. So Bali let go of, he relinquished his body. He attained one with Bhagavan. Sumana mala jimikantate giratana janena. And the example Tulsidas used a beautiful metaphor. Like just imagine an elephant walking with a beautiful garland around its neck. And suddenly the garland dropped from the elephant's neck. The elephant has no clue about the garland dropping from its neck. And Jan say, the elephant is just walking, the mala just dropped like nothing. Similarly, when death comes, we all will relinquish his body in a similar way. There'll be no pain. Providing the karma is good. Providing Ram Ram japte hai. Providing we call upon Bhagavan. Providing we sing bhajans pyare. It doesn't matter what life throws at you. This is one thing. Never forget to sing Bhagavan's name. So this is how Bali gave up his body. So eventually when Bali passed away, news came to the people of Kishkindha. And there was a huge commotion. Tulsidas writes in the Chaupai, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Ram Bali निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। श्री राम जय जय राम। Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. श्री राम जय राम जय जय राम। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केसन देह संभारा। श्री राम जय जय राम। Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. श्री राम जय Ram Bali निज धाम पठावा. Bhagavan Shri Ram sent Bali to his abode. Nagara loga sava vyakula dhava. There was a huge commotion in Kishkindha when the news came that Bali passed away. Tara vidhi vilapa kar, Nana vidhi vilapa kar Tara, and the wife of Bali, Tara Devi, started to cry. Now, this is how any family member would respond. You hear the death of a, especially losing a husband, a dear one. The first thing, we respond emotionally. Tears come to the eye. We grieve. Arjuna found himself in a similar situation. That's why Bhagavan allowed him to speak in the first chapter. Arjuna asked so many questions. Bhagavan bhi kuch bhi nahi bola. In the first chapter of Bhagavad Gita, he didn't say anything. Arjuna asked all these questions. Then Bhagavan comments the teachings, and the first subject Bhagavan addressed was death. The first subject Bhagavan addressed was death. Death. Mrityu kya hai? What is death?
You know, the same person, when the person is alive, you love the person as your spouse, your husband, your child, a family member. The moment the person dies, there's a separation. It's fair, isn't that true? There's a dead person, I'm just giving. And the same person you loved a minute ago when the person is alive. You love the person because of the presence of Ishvara. Because of the presence of Bhagavan, you love that person. So we love our family, our friends, spouse, husband, wife. You love them because of the presence of Ishvara. We have to understand this. The same person you love a moment ago, the moment the body is body, there's fear. ये तो भूत है, मैं पास नहीं जाता. So Taraji Nana Vidhi Vilap Karatara, Chute Kesh and Deha Samala. She couldn't control her body. Deha na Samala and Chute Kesh. She opened her hair and started to grieve. Lament and cry. Lament and cry. When someone passes away, someone dies, do we grieve for the body? These are some rhetorical questions. Just think about it. Can you grieve for the physical body? Sochi. Excuse me. Can you grieve for the physical body? That's the first option. Second option, can you grieve for Atma? All the answers we can find in Bhagavad Gita. You can't grieve for the physical body because as we speak here, cells are dying and new cells are being created. The same child that took birth a couple minutes ago, the child starts to grow. A couple of weeks after, the child wants to move and turn and want to walk, want to get up and get things done. So the body does not remain the same. We all know that one time, some of us had hair. Chubby, beautiful cheeks, black, nice hair. क्या करते हैं? डालते हैं. It's getting white and we want to make it black. That's nice. Look pretty and handsome, but when you do it with understanding, it won't last. This is with his space and time pyare. This is not who we are. Na me mrityu shanka, na me jati veda. Shankaracharya said in Atmastakam. You're not all of these things that we get attached to. So you can't grieve for the body because the body does not remain alive. It cannot stay alive. It keeps aging, it keeps growing. As a matter of fact, we die every day. And there'll be one day when we die completely. When we do puja, you notice Panditji, if the Panditji perform the puja, according to Vedic injunction, they will say, Prana swaha, when you offer prasad, when you offer the prasad. Prane swaha, pane swaha, vyane swaha, udane swaha, samane swaha. There's this પાંચ prana in this body. And when we die, you'll find some people, the doctor may pronounce them dead, but still the body moves. It takes a while for these pranas to exit the body so totally. It takes time. It doesn't happen just like that. Like this person dies and everything goes away. Prana takes the time to exit the body. So you can't grieve for the body. You can grieve for Atma, no awareness. You can't grieve for awareness. Tattvamasi, the Vedas say, you can't grieve for that. That's who you are. The third option is that we can only grieve for the memory. So understand this: when someone passes away, you can't grieve for the physical body. You can't grieve for Atma. You can only grieve for the memories you have with that person. Cry, express your emotion, how much you care for that person. But do not overdo it, because I see some very good acting at funerals sometimes. These people can get award for acting. When the parent is alive, or the dear one is alive, बहुत busy hai. They're very busy, but the time of death, they're put on a drama, you think that this person is acting on the silver screen. The best seva to do is when the parent is alive. The best shraddh to do is when they're alive. Do your seva, pyare. Take care of them whenever you can. And when they die, you cry for them. Cry with understanding that Atma will not remain the same. The body cannot, the Atma will not stay in the body at all times, and the body would not remain the same. So she started to cry. Tulsidas ji writes in Jara Chaupai,
Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram तारा विकल देखी रघुराया, तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram तारा विकल देखी रघुराया. Bhagavan saw Tara ji was lamenting and crying. She just lost her husband. How else would she respond to the news of the death of her husband? Deen hi gyan hari leen hi maya. You see, when we get Atma Gyan, the moment the jiva is prepared, the moment that we are prepared, Bhagavan sends the Guru to you. The Guru will remove all maya, all ignorance. And when one is enlightened, the jiva becomes one with Bhagavan. And generally, again, I've said this a few times, and we're just going to repeat it so that it's clear, so we understand it totally. You cannot die and attain moksha. One has to become a jivan mukta. One has to rise above the pairs of opposites. One has to awaken the presence of Ishvara in the heart. One has to become a self-realized person before the body goes. If not, you have to come in this world again. So the body will go. The prarabdha karma that brought this body into existence, we don't have control over that, how long it will last. So you see these jivan mukta sadhu, they have nothing else to do in this world, but they continue to do seva, continue to live their lives. For such a person, when the body goes, that jiva does not come in this world again. Because Kshiti Jala Pavaka Gagana Samira, the five elements made up this body. Pancharachit Atya Dhamma Sharira, this fragile body is made up of these five elements. And you know, when we look at life carefully, we prepare for so many events. And we should prepare for them. The birth of a child, Upanayan Mundan Samskar of a child, Upanayan Samskar, Vivaha of this ceremony of the child, graduation of it, all these things we prepare for. But we don't think about that. This is Bhagavan's kripa. He allows us to live. But when the mind becomes mature, we understand that death is imminent. We can't escape it. So how are we preparing for this final moment? Remember, if we do not attain moksha while we are alive, we have to come in this world again. The goal is to rise above all these pairs of opposites, to recognize who you are, to become one with Ishvara. And it comes by giving up attachment. Little things we have to prepare ourselves for. Slowly we have to detach ourselves. Love your spouse, love your children, love your parents, love everyone. Love them with the understanding that they are temporary. They're only placed in your life temporarily, based on karma. We all meet here. Our karma has a connection in the past. We meet for satsang, we meet for puja path. But this relationship that we all have is only temporarily, pyare. Look how many parents you had in the past. Look how many wealth you had in the past. Imagine if you had memory of your previous birth, who you were in your previous birth, and you're a wealthy person in your previous birth, and someone killed you and took your wealth. How would you respond in this life? You'll go and attack that person.
This is Bhagavan's kripa. He took that memory away. Be all you can in this life. Don't worry the past. We can't change it. And quite often, we think of the past and become very sad. Why this happened? Why this happened? Live in this present. Live in this moment now. So we can't grieve for the body. We can't grieve for Atma. We can only grieve for the memory when someone passes away. And this is what Sri Ram had to do for Tara Devi, to enlighten her. Likewise in Bhagavad Gita, chapter 2, verse 11, Asochananva sochastvam pragya vadamsya bhasache gatasuna gatasuncha nanu sochanti pandita. Bhagavan had to make Arjuna Pandit. Pandit का अर्थ अलग अलग है. पूजा करने वाला पंडित है. But the true meaning of Pandit is one who has jnana of the Shastra. A knowledgeable person. So Arjuna had so many insecurities. Bhagavan had to remove his ignorance, told him what Atma is, and he enlightened him. He made him Pandit, and afterward Arjuna said, I'll do my duty. So when we're enlightened by the Bhagavad Gita, my friends, please, there are many children versions of Bhagavad Gita. Please download one, please buy one, sit with your child. It's an opportunity for you also to study Bhagavad Gita. So study it with your child together. Let us discuss this beautiful discussion between Bhagavan, Shri Krishna and Arjuna, the song of life. Then we'll be proud Hindus. Boli Ramachandra Bhagavan ki jai, Pavan Sutta Hanuman ki jai, Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai. We receive greetings from the Premier for Diwali. So just want to show everybody he sends special Diwali. Every year he sends. Right? So Diwali is celebrated with so much pomp and joy now. Probably you saw on the news what happened in Mississauga last night, right? Who saw on the news? It didn't reflect good on the community and Hindus. देखा आपने ना, सुना आपने ना? 4 बजे तक पटापट करते थे. They're doing firework till 4 p.m. Hindus celebrating Diwali, and they make a huge mess outside in the parking lot. अच्छा नहीं लगा. I hope you had a very wonderful Diwali. May Lakshmi Ma continue to bless you and your family, bless you with wealth, fulfill your desires. Once again, a very happy New Year to our Gujarati brothers and sisters. We will sing and meditate on Hanumanji. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Gaiye. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Bolo Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 So Bhaktajano, we'll try to meditate for about 30 seconds, but I kindly ask you, please put your phone on silent at this time. You are in a meeting with Hanumanji. No other phone call is important for you at this time. If you're waiting on a phone call for a job, you'll get it. Or just put the phone on silent. Hanumanji will make it possible. So please put your phone on silent, please. So all of us can enjoy a few quiet moments with Hanumanji. It's a very, very special time when we finish our short Ramayana Katha. We try to meditate a little bit. So you want to engage the mind. We'll sit in a comfortable position, please. Please do one pranayam. I know all of us have cough and cold, runny nose. But try your best to meditate for a few moments, please. You do one pranayam and then we'll observe silence. We'll speak to Hanumanji in silence. Oh.
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए रामचंद्र भगवान। So it was a sold-out show 2 weeks ago, but there are some families who bought tickets from India, but there was an emergency with them. They had to return to India. So we have about one table available, 8 or 10 tickets available. If you like to purchase tickets and be a part of this celebration, please let us know after Arati. Ramachandra Murte Namaha Hanumate Namo Namaha. Anyone has prasad to offer? Anyone just came with prasad? Please bring your prasad. Offer prasad, please. Pandit ji bhog lagayenge. Please bring your prasad. Anyone has prasad? इसके बाद आरती होगी. श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमो नमः. मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। ऊपर कोट के साथ मत जाओ भैया, कोट के साथ जाना मना है. नीचे रखो, अंदर रखो. काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मेरी सुन लो मारुति नंदन। मुझ पर भी करुणा करना, मैं आया शरण तुम्हारी। मैं जोड़े हाथ कराऊं, तेरे दर का बना भिखारी। तुम सबसे बड़े भंडारी, मैं पानी तुम हो चंदन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। तेरा नाम बड़ा दुनिया में, सब तेरा ही गुण गाए। इस जग के सब नर नारी, चरणों में शीश नवाए। कर भव से पार मुझे भी, हे बाबा संकट मोचन। हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मेरी सुन लो मारुति नंदन,
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आरती करेंगे। Will come in the line, please, and once again offer arati and come along that way, please, and you will take from here. Please don't cut the line. We have enough time for everybody, and just use those and put them back there. These two only for this Vedi only, please. Everyone come, खड़े हो जाइए। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिराए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आन संजीवन प्राण उबारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सखारे, आन संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन पारे। आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान चारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय, हनुमान लला की आरती की जय, हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय, हनुमान
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम गाइए राम 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 सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम राम राम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओम श्री राम जय राम 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 आरती नीचे रखिए सबको हाथ जोड़िए एक्सपेशली द चिल्ड्रन सबको अच्छी तरह से हाथ जोड़िए ऐसे करो जय जय ऐसा करो ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं च नारदन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय जगदम्बे मैया की जय हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव सत्य सनातन धर्म की जय।